गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल? हम स्प्लीन की बात कर रहे हैं। हमने पिछली क्लास में बात की थी। द स्प्लीन इज द मेरिडियन हु इज हैविंग कनेक्शन विद द ट्रस्ट। द वर्च्यू ऑफ द स्प्लीन इज ट्रस्ट। हम क्विज को सॉल्व करना है कि अगली क्लास में सॉल्व करें? पहले हम स्प्लीन खत्म कर ले, फिर हम क्विज को सॉल्व की बात करेंगे। लेट्स कंप्लीट द स्प्लीन। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस so the virtue of spleen is ट्रस्ट। आपने वो कहानी सुनी होगी ना, शायद आपने कहानी सुनी होगी। एक कहानी है। अब वो कहानी में इंग्लिश में सुनाने में मुझे बड़ी प्रॉब्लम है। वो वाले शब्द कहाँ से लाऊं? हिंदी में तो बड़े आला तो सुना सकता हूँ। वो होता ना, एक द पर्सन हु इज वॉकिंग ऑन द रोप। जो नट होते हैं, जो दे आर वॉकिंग ऑन द रोप टेकिंग द। हाँ हाँ, हिंदी तो मैं बता रहा हूँ। पहले हिंदी में बताता हूँ कि एक वो जो हम देखते हैं कि पहले काफी कॉमन था कि लोग है ना रस्सी पे चलते थे, ऐसे करके बैलेंस करके। द पर्सन इज वॉकिंग ऑन द रोप एंड बैलेंसिंग। So there was a lady was walking on the rope and was balancing, right? Then the lady has taken his small baby, maybe 6 month small baby. Okay, then he walked on the rope. So everyone clapped. Wow, wow, wow! This wonderful lady. The same lady, यानी उस लेडी ने पहले क्या किया, अपने 6 महीने के बच्चे को गोदी में लिया और रस्सी पर वॉक किया। फिर उसी ने अपने 4 साल के बच्चे को भी गोद में लिया और रस्सी पर वॉक करके दिखाया। सब लोगों ने बड़ी ताली बजाई, राइट। फिर वो लेडी ने सबसे बोला कि आप सबको मेरे ऊपर विश्वास है? कहा हाँ हाँ, बड़ा विश्वास है। तो उस लेडी ने कहा, एक छोटा बच्चा खड़ा था 3 साल का, लाओ ये बच्चा मुझे दे दो, इसको लेके मैं चल। तो पेरेंट्स ने क्या बोला होगा? पेरेंट्स ने कहा नो। ट्रस्ट, ट्रस्ट। व्हाट इज ट्रस्ट? व्हाट इज ट्रस्ट? आपको मालूम है कि जब एक पेरेंट्स बच्चे को ऊपर उछालते ऐसे, और बच्चा ऊपर जाके हंसता है ना? When someone is like leaving the child in the air, then kids are laughing. आप बड़े हो गए, आपको कोई उछाले, है ना? आपको कोई उछाले, एक अच्छा सा आ जाए कोई सूमो पहलवान जैसा और आपको उछाले, आप ऊपर टेंशन में रहोगे, कब पता नहीं क्या होगा, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। बिकॉज द स्मॉल बेबी इज हैविंग ट्रस्ट, है ना? ट्रस्ट। सो व्हाट इज ट्रस्ट? ट्रस्ट इज द रिजल्ट ऑफ स्प्लीन। Your spleen is good. Your spleen is good. Then you will be having trust. You are also trustworthy person and you are having trust. Sometimes maybe person, suppose your spleen is good. आपकी स्प्लीन अच्छी है, आपको सारी दुनिया ट्रस्टी बढ़ती ही दिखेगी। जैसे एक होता है पुलिस वाले को हर व्यक्ति चोर दिखता है। द पुलिसमैन, when someone seen a policeman doing some strange things, policeman will be thinking, oh, he is some wrong person. We are a doctor, we are a healers. When we'll see, or someone is walking like this, or maybe he's having knee pain, right? जब कभी आप
वो रेलवे स्टेशन पे जाना, जो मुंबई का मेट्रो स्टेशन होता है ना, मुंबई का मेट्रो, गए हैं कभी मुंबई? नो मेट्रो, मुंबई लोकल ट्रेन स्टेशन। आपने देखा है वहां एक व्यक्ति जूते पे पॉलिश करता है। द he only look at your shoes. If you are wearing the shoes which can be polished, he will do some sound, right? He just look at the shoes. So what I want to tell you, if the spleen is good, you will be having trust on everyone. Your vibration is like this. Oh, I'm wife is having trust on husband, husband is having trust on wife, two brothers, two friends, they have trust on each other. Once spleen is getting weaker, then you lose your trust. तब आपका ट्रस्ट ढीला पड़ता है, राइट? और स्प्लीन वीक करने का सबसे बढ़िया उपाय है, आई विल टेल यू हाउ टू वीकन द स्प्लीन। स्प्लीन को कमजोर कैसे किया जाए, एक बहुत ही सरल उपाय मैं बताने वाला हूं, और आप करके रहोगे। द वेरी इजी वे टू वीकन योर स्प्लीन, कि सारा दिन पढ़ो, सारा दिन पढ़ाई करो, थ्रू आउट द डे just study, throughout the day just work on the computer. Slowly and slowly your spleen will be weaker, है ना? और ये डॉक्टर्स की स्प्लीन तो जरूर कमजोर होती है, 90%। वाई? टिल यू आर ए, आपकी स्प्लीन तब तक सुरक्षित है जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हैं। वंस यू बिकम सक्सेसफुल डॉक्टर, ओ डॉक्टर निमिषा, द फेमस डॉक्टर सूरत, अब निमिषा जी की स्प्लीन कमजोर चालू, बिकॉज नाउ निमिषा जी हैज टू गिव लॉट्स ऑफ ट्रीटमेंट। निमिषा जी इज नॉट हैविंग टाइम, have to read, have to give the treatment, right? So sitting throughout the day, watching television, watching movies, okay, little bit okay for entertainment, but throughout the day, every day watching television for 6 hours or 8 hours, reading throughout the day 8 to 10 hours, working on the computer 8 to 10 hours, will weaken the spleen. स्प्लीन कमजोर कर देगी। Why? Because you are not moving your abdomen. पेट नहीं हिला रहे आप, इसलिए। बस पेट हिला लो तो वीक नहीं होगी, पेट तो हिलेगा नहीं। As soon as you're getting up in the morning, patient is calling, doctor, I'm waiting. When you're coming, you're running. Oh, today no exercise, no pranayama. In the afternoon, you're eating the food. Receptionist coming, doctor, patient is waiting. Oh, finishing in 3 minutes. पवन जी, बहुत पेशेंट देखते हैं आजकल, 50-50 पेशेंट देखते हैं। देखो सवेरे शाम एक ही कुर्सी पे बैठे रहते हैं, उसी कुर्सी पे हिलते रहते हैं बस पवन जी, गोल 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 गोल, है ना? स्प्लीन बचा के रखना, पेट को हिलाते रहना। डू सम प्राणायाम, कपालभाति, डू सम एब्डोमिनल एक्सरसाइज, डू सम कोर एक्सरसाइज, स्ट्रेंथन योर कोर मसल्स। नहीं तो बचने वाले नहीं है, है ना? Right? So what is the quality of the spleen? Spleen is like a knife या कैंची, knife. You are eating the food, it will divide the food in two parts. One heavy part will go downward, one very light essence will go upward. Right? A spleen is dividing food in two parts. स्प्लीन का काम है कि फूड को दो भागों में बांट देना।
All kidney is always in the contact of a spleen. Hello spleen, I'm kidney. If you need fire, please ask me. So because kidney is having lots of Ming Man, kidney is the having treasure of fire. So kidney always calling, okay spleen, do you need fire? Because I know that you have to digest the food. Yes, spleen is telling, yes, kidney ji, I need fire. Okay, I'm sending. Then from the Ming Men chakra, from the governing vessel 4, kidney will be sending fire to spleen. Now, spleen, whatever you have eaten, spleen will make the wonderful food chain. स्प्लीन का एक ही काम है कि खाने में जो भी अच्छी चीजें उसको स्टीम बनाकर ऊपर भेज देना. दिस इज द वर्क ऑफ स्प्लीन. स्प्लीन इज गेटिंग द फायर फ्रॉम द किडनी. स्प्लीन आपके उस गैस के चूल्हे की तरह है जिस पर पानी रख दोगे, उबलेगा और भाप बन जाएगी, और वो भाप ही हमें चाहिए. बिकॉज our body need a very fine essence, very very fine, that only will travel in blood, right? अब क्या हुआ? We are not moving our abdomen. We are throughout the day we're just sitting and sitting and sitting throughout the day. Then slowly and slowly spleen will be having lots of load of the fat, load of the right, from the right side, left side, poor circulation. अब आपको क्या करो, एक छोटे से कमरे में बंद कर दो. आपको, यू जस्ट थिंक, आपकी हाइट कितनी है? मान लो 5.5 फीट है. इफ वी आर क्लोजिंग यू, इफ वी आर कीपिंग यू इन द रूम 7x7, इधर से भी इतना, इधर से भी 7x3, नॉट 7x7, इतने रूम में आपको बंद करके रख दे, क्या होगा? Throughout the time, throughout 24 hours, for 7 days, what will happen? You will get suffocated. Am I right? अगर आपको एक छोटे से रूम में बंद कर दें, जैसे आपका क्या होता है, जैसे वॉशरूम होता है ना छोटा, इतना छोटा आपके लिए घर बनाए और उसमें बाहर से लॉक लगा के बंद कर दें, what will happen? You will get suffocated. The same thing happening with the spleen, because you are compressing the spleen from all around, because all the time eating. Morning 8 o'clock breakfast, 11 o'clock snacks, 12:30, 1 o'clock lunch, then 3 o'clock again snacks, 3 o'clock or 4 o'clock, then dinner, and if we are getting till the late night, then 11 o'clock again snacks. Spleen is fully suffocated, compressed in the small room. Then spleen will stop doing her work. Spleen अपना काम करना बंद कर देगी, या बोले कम कर देगी. What is the work of spleen? What is the real work of spleen? The real work of spleen, take the water and boil it. So spleen is doing this. Whatever you are eating, it's making the steam. That steam will go upward. Only steam can go upward, right? But now spleen will not able to do that. Spleen is weak, spleen is compressed. What will happen? As soon as the spleen will be weaker, it will not able to send the fluid upward. जैसे ही स्प्लीन कमजोर होगी, ये फ्लूइड को, जल, हमारे खाने में पाए जाने वाले इसेंस को ऊपर नहीं भेज पाएगी, अब वो फ्लूइड नीचे जाएगा. द फ्लूइड विल गो डाउनवर्ड. Now will create heaviness in the abdomen. Oh, I'm feeling bloating. Oh, I'm feeling heaviness in my stomach.
Even I eat this much food na, I feel heaviness. Only I eat one chapati. And look at that person, he's eating 8 chapati, 6 chapati. I'm eating only 1 chapati. I'm eating small rice. I'm feeling bloating. इतना सा खाना खा के भी पेट ऐसा लग रहा है फटा जा रहा है, because spleen is weak. So the first sign of the spleen weakness, bloating and abdominal distension. और बॉडी बोल रही है भैया मत खाओ, बहुत खा लिया पहले का. Nausea. Nausea. Nausea is the sign of poor spleen. Spleen energy is weak, nausea, bloating, abdominal distension. Right? Now that fluid will go downward. Now it will go in the uterus, will come in the form of white discharge, leukorrhea. It will go downward, will create the swelling, water retention. Right? So generally, आपको मैं घर दिखाता हूं. ये देखिए घर, देखिए कैसा है. बताइए इस घर में क्या विशेष बात है, बताइए. What you can see in this image, क्या लग रहा है देख के? आप ऐसे घर में रहना चाहेंगे? Would you like to stay in this room? Would you like to stay? आप एक होटल में गए और आपको ऐसा रूम दे दिया. Would you like to stay? No. This is a dampness, dirtiness. The same thing happening inside the body when we are not controlling on eating. When we are not eating again and again, when we are eating wrong food. Wrong food. What is the wrong food? As per the Ayurveda, we are eating toxin. What is toxin? आपको कोई जहर देगा, आप खाओगे? आपको कोई थाली में जहर परोस के देगा, बोलेगा जहर है, पेट भर के खा लो, खा लोगे आप? क्या बोलोगे? तू खा ले बेटा, तू ही खा, मैं क्यों खाऊंगा? लेकिन हम खाते हैं. What is poison as per the Ayurveda? Your food is not digested, still you are eating the food. That is poison. Okay, you want to do the confirmed diagnosis? Okay, then check your stool. It will be sticky when you are flushing the water. आपका जो स्टूल है वो पॉट से चिपकेगा जब आप पानी फेंकोगे. इसका मतलब है कि आपके शरीर में डैम्पनेस बन रही है. There is a formation of the dampness. So how to strengthen the spleen? Number one, if your spleen is weak, remember one thing, if your spleen is good, then no problem. The rules are not same for everyone. कोई भी नियम सबके लिए एक नहीं होता. अब ये नियम जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सबके लिए नहीं है. This is a rule only for the person having weakness of the spleen, feeling bloating, abdominal distension. What is the rule? Number one, don't eat raw salad. कच्चा सलाद मत खाइए. Don't drink cold water from the refrigerator. फ्रिज में से ठंडा पानी निकाल के मत पीजिए. Don't eat the fruits you kept in the refrigerator immediately. आपने जो फ्रूट फ्रिज में रखे हुए या काट के रखे तुरंत निकाल के मत खाइए. Let them come to the normal temperature. They will weaken your spleen immediately, within a fraction of time. So in the TCM, it's very clearly mentioned. The person who is suffering with a weak spleen, who is suffering with a weak spleen? The person who eats lots of raw salad. Then you will ask whether the raw salad is bad. No,
It's very good for the person having good spleen. But if you are having bad spleen, so please avoid it till your spleen is becoming good. Then what to take? You can take steamed salad, steamed vegetables. तो जब भी आपके पास कोई पेशेंट आए, बोले डॉक्टर साहब कि मेरा पेट फूलता है, मुझे नौशिया होता है, ब्लोटिंग होती है, सो फर्स्ट एडवाइस, प्लीज अवॉइड रॉ सैलेड, रॉ थिंग. Then what to take? Okay, take the steamed food. आपको मालूम है कि आप में से कोई सिंगिंग करता है क्या? एनीवन डूइंग सिंगिंग? नो नो. कोई तो करता होगा, सोचे क्यों बता भी, है ना, कोई तो करता होगा. बाथरूम सिंगर है? बाथरूम सिंगर. चलिए प्रतिभा जी गाना गा के सुनाएंगे. चलिए प्रतिभा जी गाना गा के सुनाएंगे. आप प्रतिभा जी घबरा रही होगी गाना. So what I want to tell you, if the person is having good spleen, the voice will be very melodious. बहुत ही उसकी आवाज में एक रिदम होगी, रिदम. So there are two types of the voice. If the voice is having rhythm, a wonderful rhythm, it is a sign of balanced spleen. The balance of earth element. If the person is having hoarseness of voice, अगर उसकी आवाज में खरखरापन है, अगर किसी व्यक्ति की आवाज में खरखरापन है, so that is the excessive wood element or weaker spleen. So if the singer is coming to you, अगर आपके पास कोई सिंगर आता है and the singer want to improve the voice, then strengthen the spleen. तो आपको अगर किसी की आवाज को मधुर बनाना है, और it's not only the question of singing, even the speaking in the rhythm, the earth element is having connection with the rhythm. अर्थ एलिमेंट का संबंध रिदम से है. अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं आपको. लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग. muscles of the all four limbs, whether both arm or both legs, are getting the power from spleen. आपके दोनों हाथों में और दोनों पैरों में जो ताकत है वो स्प्लीन के कारण है. So you are going in gym, you want to make your biceps, you want to make your triceps, you want to make the muscles in the thigh, quadriceps or hamstring. You are going in gym or health club. Then if your spleen is good, you will get good strength immediately. So two things. Number one thing, if your spleen is good, you are having good power in the arm and leg. अगर आपकी स्प्लीन अच्छी है तो आपके हाथों में पैरों में ताकत होगी, कमजोरी नहीं होगी. And if your spleen is weak, you will be having weaker muscles. Muscle atrophy. किसी की हाथ की मसल पतली हो गई है, that is the weakest spleen. Now you are going in the gym or you are doing some exercises and you are developing your muscles. It means you are giving power to your spleen. आपकी spleen को आप मजबूत कर रहे हो. So if you want to strengthen your spleen, do regular exercise.
develop your arm and legs, move your abdomen. आपकी स्प्लीन अपने आप ठीक हो जाएगी. The person is coming to you, doctor, my leg is very thin. Oh, muscle is very weak, so we have to strengthen the spleen. हमें स्प्लीन को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा. The test is if you are feeling wonderful test, खाने में स्वाद आ रहा है तो स्वाद स्प्लीन लाती है. The mouth is under the control of earth element. The mouth is under the control of spleen and stomach. हमारे पूरे मुख को spleen stomach control करता है. If there is any problem in the mouth, maybe some problem in the gums, some problem anywhere in the mouth, we have to balance the spleen and stomach. And we are feeling the test because of the good spleen, and we are not feeling a test, it means your spleen is weak, your spleen is disturbed, your spleen in the disharmony. Got it? जैसे one of my friend came to me, and as soon as he sit near to me and we start talking, I could feel the smell coming from the mouth. मुंह में से बदबू आ रही थी उसकी. हम आमने सामने चेयर पर बैठे थे, काफी दूर से बदबू आ रही. I immediately asked, do you have indigestion? Told yes, always. Even I am taking some medicines for that. So person is having the problem in the stomach and spleen, there will be smell coming from the mouth. उसके मुंह से थोड़ी स्मेल आती है. So stomach and spleen or the earth element open in the mouth and even control your taste. आपके स्वाद को, खाने में जो स्वाद आता है उसे वो पता करता है, कंट्रोल करता है. You will be having very good taste sensation. During the COVID pandemic, many persons lost smell and taste both. कई लोगों का टेस्ट और स्मेल दोनों डिस्टर्ब हुई थी कोविड में. Because of COVID, because of the lots of heavy medicines, antibiotics, the person is got some imbalance or the disharmony in the spleen. अब जैसे प्रश्न है, तस्नीम जी ने पूछा है, we have to eat at proper time as per biological cycle, right? Okay, time. तो आपको एकदम समय पे खाना है, right? Okay, this is good. Definitely in the Ayurveda we are telling, in the TCM we are telling that we should eat on the time. That is right. But the rule number one, we have to eat on the time. Remember the rule number one. The rule number two, we don't have to eat between two eating time. Are you getting my point? उसका ध्यान ही नहीं रखते. रखते हैं क्या? आपको ब्रेकफास्ट लेना है, लंच लेना है, डिनर लेना है, हो गया काम. Now, but you are okay. I am taking dinner 8:30, and I have to take the dinner at 8:30. But some of your friend is coming to meet you, then you are taking the snacks and tea. So no snacking in between. Number two rules. Then it's depends what you are eating. Suppose you are eating very heavy food.
So it's very clearly mentioned that we should eat the food which is very easily digestible. And mitahar means whatever our hunger, we should eat little less of them. But you are eating full of stomach. Then again you're, oh, time, this is the eating time. Okay, let me eat again. बहुत सारे लोग तो इसीलिए बीमार है कि समय पे खाना खाते, खाना भी चाहिए, but you have to remember all the rule. Number 1, no snacking in between. Number 2, eat the food which is very easily digestible, and eat little less. Right? Got it? Mitahar. Then okay. But do you follow these all rules? No. I have met with many families. They eat all together. They sit, all the persons sitting on the dining table, and they're eating the food. They're enjoying the food all together. The half of the family person are suffering with the indigestion. Why? Because they are eating the food without digesting the previous food. So what we can do, number 1, eat on the time. It is really very good as per the biological clock. Rule number 2, mitahar. Rule number 3, no snacking in between, even no tea. No anything which is having sugar. We can take herbal tea. So follow all the rules. Right? Regarding the fruits, jaggery, yeah, jaggery is very good. Yeah. We don't boil or we don't steam the fruits, but we should avoid eating the fruits after 4 p.m. शाम को 4 बजे के बाद हमें फ्रूट नहीं खाना. If your spleen is weaker, I am repeating again, the rules are not for all. If your spleen is weaker, we should not eat the food after 4 p.m. शाम को 4 बजे के बाद फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए. Now, for making your spleen strengthen, we should do minimum 1 fasting in a week, intermittent fasting, only skip 1 meal, or 1 fasting in 15 days. Right? 1 fasting in 15 days. That's why Ekadashi. It's written in the by our saint that we should do the fasting on 2 Ekadashi. But we are telling no, we are modern people. Why should follow this all orthodox things? Okay. Even it's also already written, okay, you can't do 2 Ekadashi, do 1 Ekadashi. That is, then you study the Sukla Pakshi Ekadashi. There lots of freedom has been given. Just do something, little bit, to make your spleen weaker. Otherwise, if your spleen is weak, your abdomen will become heavy. If your spleen is weak, it will not able to ascend the energy up. अगर आपकी स्प्लीन कमजोर होगी, ये ऊर्जा को ऊपर नहीं चढ़ा पाएगी. जैसे मोटर पंप से पानी ऊपर चढ़ाते, ये स्प्लीन will not able to raise the chi up. Erectile dysfunction, because everything become heavy, you can't hold anything. Erectile dysfunction in the male is due to weakness of the spleen, because you can't hold anything. You are having lots of heavy energies in the stomach. Right? So jaggery is good. See, I will tell you, jaggery is very good. Now I will tell you
Again, I am telling you, rules are not same for all, right? Some person might feel very like migraine headache if not eating the food on the time. Okay, so rules are not same for all, but we have to understand some basic rules. हमें कुछ basic rules समझने होंगे. Now when we talk about the saliva, चलिए saliva, ये तो मैंने बच्चे का फोटो दिखाया है, but saliva. So tell me, in the 5 element cycle, saliva is coming in the liver, heart, spleen, lungs or kidney. What do you think? एक व्यक्ति है जो जिसको मुंह से सैलाबा टपकता, one person is having maybe one mental retarded kids, there is saliva is coming out, or maybe some male or female sleeping in the morning, you can see lots of saliva, or maybe some old person saliva. So saliva coming in which element? Yeah, so right answer will be this. Please listen carefully. There are two types of saliva. One is the very thin, watery saliva. It's coming due to the weakness of spleen. If your spleen is weak, there will be watery saliva. But if the saliva is very thick, it is due to weakness of, किसकी weakness बताइए? अगर बहुत गाढ़ा saliva है, it is the weakness of kidney. Wonderful mission. Kidney. So when we see, oh, saliva is coming out, we always see, okay, that is the beauty of 5 elements. That is the beauty of TCM. One person coughing and cough is coming out like a water. Or for other person, cough is coming very thick form, in the thick form. One person is having saliva like a watery, that is spleen, weakness. One person is having saliva, it is a very thick saliva. That is due to weakness of kidney. So remember this thing. Right. तो ज्यादा बैठने से क्या कमजोर होती है? स्प्लीन. क्लियर? Clear? If we are sitting for the long time, what we are doing? We are weakening our spleen. Got it? आपको मालूम है कि ओठों पर लिपस्टिक क्यों लगाई जाती है? Anyone? Why we are putting lipstick on the lips? Okay, can you tell me why the lips are, whether lips might be naturally like lipstick? क्या lips लिपस्टिक जैसे लाल हो सकते हैं नेचुरली, बिना लिपस्टिक लगाए? हो सकते हैं क्या? नो और यस? यस. Yes. Who is making your lips pink or red naturally? That is deposition of the melanin. अब आप बोलोगे मेलेनिन तो काला होता है, ऐसा सोच रहे हो क्या? आर यू थिंकिंग मेलेनिन? There are 3 types of melanin. One is black, and
Another is pink also. You have seen many foreigners having the golden hair. Have you seen that? That is due to melanin. So we Indians having black melanin, but in the Indians also, the mucous membrane of the many part, like the genital parts, like the lips, they are having the good deposition of melanin, which is making your lips naturally pink, and it is under control by spleen energies. Yeah. So black, blonde and pink. Excellent. अगर आपको अपने लिप्स को अच्छा बनाना है, you have to work on the spleen. The lips are under control by spleen energies. So we can see nowadays, because of the hormonal imbalances, because of the weak spleen, lips are becoming black. फिर चकमा देने का काम होता है. चकमा कैसे देते हैं? लिपस्टिक लगाकर. अब देख लो लाल है. I am having too much few melanin. See my lips, it's red. Right. Even I have seen many male person also, they are having red lips. Red lips. Right. Naturally. But very few. So now, if the person is having dry lips, person is having black lips and asking you a help or do something, then we have to strengthen the spleen. हमें spleen को मजबूत बनाना होगा. So lips are naturally pink due to deposition of melanin. It is making lips pink, right? Now, if lips looking black, pigmented, dry, cracked, they are the sign of disharmony of the spleen. स्प्लीन को क्या पसंद है? My question from you, whether spleen like hot drink or spleen like cold drink? स्प्लीन को ठंडा पसंद है कि गर्म पसंद है? बताइए. बोलिए. Spleen always like hot drink, always. Because I already told you, if you are eating the raw salad, if you are eating something from the refrigerator, drinking the cold water, it will weaken your spleen. Spleen को क्या पसंद है? You have to drink some hot soup or something which is hot. Even you are taking hot coffee, at least the hot heat is making your spleen good. अच्छा. किडनी को क्या पसंद है? किडनी को किडनी को किडनी वांट टू बी कूल. एम आई राइट? अब देखिए, आंखों में लगाते हैं काला काजल, काला लगाते हैं ना, और लिप्स पे लगाते हैं लाल. जरा उल्टा करके देखो कैसा लगेगा. आंखों के नीचे लगाओ लाल और ओठों पे लगाओ काला, और थोड़ा बाल फैला के ऐसे थोड़ा अंधेरे में निकल जाओ, फिर क्या होगा? कल्पना करिए. So we have to give spleen like hot color. Red is the hot color, है ना? चलिए निकलिएगा नहीं, एक अपना फोटो खींच के इंस्टाग्राम में तो डाल ही सकते हैं, है ना? वो तो कर ही सकते हैं, वो तो अपने घर की बात है.
बहुत सारे उसमें लाइक्स मिलेंगे, है ना। मैत्री जी डालेंगे क्या? Okay, है ना। So everything is very scientific. Spleen like heat, so we put the red color or any color which is having hot nature. Right? Hot. Got it? So the work of spleen, sending the energy upward, keeping everything upward, holding everything upward, sending the blood upward. स्प्लीन का एक ही काम है, हर चीज को ऊपर भेजना, आपकी स्किन को ऊपर खींच के रखना. As spleen is becoming weaker, skin will become like this. Wrinkles. Wrinkles are because of the weak spleen. Then your body will not able to hold the thing up. Spleen is keeping your uterus up. If spleen will weak, uterus will be prolapsing down. Uterus नीचे की तरफ prolapse करने लगेगा. There are two elements are keeping uterus on the right position. One is spleen, second kidney. अगर आपका स्प्लीन कमजोर है तो यूट्राइन प्रोलैप्स होगा. If spleen is good, it will pump the blood upward. Otherwise, if spleen is weak, it will not able to pump the blood upward. Varicose veins. लोग पूछते हैं वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट बताओ, स्प्लीन का ट्रीटमेंट करो बस. डू द ट्रीटमेंट ऑफ स्प्लीन. झुर्रियां हो गई, ट्रीटमेंट बताओ. प्लीज टेल द ट्रीटमेंट ऑफ रिंकल्स. एनीथिंग इज प्रोलैप्सिंग डाउन, प्लीज टेल द ट्रीटमेंट. स्ट्रेंथन द स्प्लीन. स्प्लीन को मजबूत करो. सलावा नीचे टपक रहा है, होल्ड नहीं हो रहा है, नॉट एबल टू होल्ड द सलावा, स्ट्रेंथन द स्प्लीन. इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया है, वीर्य होल्ड नहीं हो पा रहा, अनेबल टू होल्ड द सीमेन, स्ट्रेंथन द स्प्लीन. वाइट डिस्चार्ज, लिकोरिया, अनेबल टू होल्ड द फ्लूइड, स्ट्रेंथन द स्प्लीन. पेट बढ़ता चला जा रहा है, द एब्डोमेन इज बिकमिंग लाइक ए वेरी बिग. द कलेक्शन ऑफ डैम्पनेस, strengthen the spleen. It will send the fluid upward. If spleen is good, it will send the wonderful energy to the head region. You are having good memory. And if spleen is weak, it will not send the fluid energy upward. Cloudy feeling. ऐसा लगेगा कि यार सोते रहो, ऐसा लगेगा यार कुछ समझ में नहीं आ, दिमाग चल नहीं रहा है. Mind has become dull, lazy, dizzy. And if spleen is weak, it will send the energy upward like this. You are sitting like this. Spleen is good. Spleen is weak. एक घंटे से मैं बोल रहा हूं, कुछ भी समझ में नहीं आया, मतलब स्प्लीन गड़बड़ है ना. खुद ही आप डिसाइड कर लो कितना समझ में आया. अब वो एक अलग बात है कि कोई नींद में है,
किसी का टाइम हो गया है, 2-3 लोग नींद में अभी दिख रहे हैं मुझे, उनको काउंट मत करना, उनका तो नींद का टाइम हो गया, वो तो सही है। बट एनी टाइम यू फील यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, it means spleen is not sending chi to the head region. So that's why it's very mandatory for the students to play the sports, to play the football, to play the cricket. उनको पढ़ने से ज्यादा खेलना जरूरी है उनका, बच्चों का। Because if spleen is good, they will read within short time, they will study within short time. But if spleen is weak, even throughout the day they are sitting with books, nothing will go in the mind because spleen is weak. तो बच्चों को ज्यादा ठंडा मत खिलाइए। ओके, ठंडा मीन्स कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड रेफ्रिजरेटर वाटर, नॉर्मल जो मटके का पानी पिलाइए, द वाटर फ्रॉम द अर्थन पॉट, आइसक्रीम्स। राइट, फिक्स कर लीजिए 15 दिन में एक बार, नेक्स्ट every alternate Sunday take the ice cream. You make the some schedule so kids will not be unhappy, but every day after the meal you are eating the ice cream means you are making the mind of your kids dull. They will be very active. As soon as they start studying, they will become inactive. Right, so remember this thing. ये कुछ चीजें आपको याद रखना है। तो चलिए आज की क्लास को यहाँ पर हम विराम देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नींद में हैं, उनको देख के थोड़ा सा मेरा जी घबरा रहा है, और अब हम कंटिन्यू करेंगे कल। राइट, तो कल मतलब अभी क्लास कल करना है कि मंडे को करना, व्हाट यू वांट, टुमारो और मंडे? ये भैया कल तो सोने दो, है ना, कल तो सोने दो, थोड़ा गरम गरम पानी पी के स्प्लीन को अच्छा करने दो, है ना, मंडे से विल बी एक्टिव। तो आप सभी लोग एक नियम बनाइए, दिस इज जस्ट माय वन एडवाइस, if possible do the intermittent fasting at least once a week. इंटरमीडियंट फास्टिंग मीन्स 16 घंटे कुछ नहीं खाना। 16 बहुत आसान है, रात को 8 बजे खा लिया, सुबह 8 बजे तक तो पता ही नहीं चलेगा, 4 घंटे और रुक गए, इससे कहते हैं इंटरमीडियंट फास्टिंग। स्टार्ट डूइंग एटलीस्ट वंस ए वीक। कितना करना है कि बस एक ब्रेकफास्ट स्किप करना है, हो गए 16 घंटे। Then after few days do twice a week, just twice a week is good. Follow this for at least 3 months. Drink little hot water. Avoid cold drinks. Walk 100 meter after eating the food, slow walk, not fast walk. Work on spleen, right? तो हम हमारा जो 5 एलिमेंट का कोर्स है हम ढंग से समझ पाएंगे, राइट? बिकॉज आवर मेमोरी विल बी गुड, then we'll able to grasp the thing properly. So thank you so much everyone. Now see you on the अब मंडे को मिलेंगे, see you on Monday, right? Okay, मंडे। तो कल हो सकता है कि मैं आपको एक क्विज दे दूंगा, आई विल गिव द क्विज टुमारो, जस्ट सॉल्व द क्विज, और मैं सारे वीडियो भी आपको दे दूंगा। आपको पता ही है, प्लीज प्रिपेयर ऑल द वीडियोस, मेक द प्रॉपर नोट्स, यू हैव टू सबमिट द नोट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द क्लास, आपको नोट्स सबमिट करना है।
जैसे भी हाथ से लिखकर, थोड़ी अच्छी राइटिंग में, या फिर कैसे भी लिखकर, you have to submit the notes. Very good. And after the 8 days of class, you have to submit all the notes. Click the photo and submit. Thank you so much. See you on Monday. Have a wonderful sleep. Have a wonderful weekend. See you on Monday. Bye bye.